The crisis of democratic order. If I talk on a personal ground, this chapter actually explains the current status of our politics. अभी तक हम लोगों ने ये देखा है कि what were the challenges that came when India got its freedom, then how they were resolved, what were the foreign policy, then when it came to the political system, so what kind of system we had, and then now you may be seeing that there are multi-party systems. अगर हम लोग पहले वाले चैप्टर को थोड़ा सा लेकर चलते हैं तो उस वक्त में हम लोगों ने ये देखा था कि हमारा जो है उस वक्त सिस्टम जो है इट वाज बेसिकली वन पार्टी. इट वाज नॉट लाइक अ वन पार्टी सिस्टम बट यस वन पार्टी डोमिनेटेड. But right now, if we talk about the politics, we would be looking that there are multi parties. तो ये जो आज हम लोग पॉलिटिक्स को सामने देखते हैं, हाउ डिड इट एक्चुअली हैपन, व्हाट वर सम ऑफ दोस crisis or some of those elements that shaped up the Indian politics to the next level. Why people what we call as democratic upsurge, ऐसा क्यों हुआ था. तो जो लास्ट हमारा चैप्टर है ये उसी से रिलेटेड है. When Indira Gandhi had emerged as a leader, so definitely she was one of the statesmen among the world leaders, since she had taken up all those decisions which was difficult, which is quite difficult for a woman to take. लेकिन एक तरफ when she was being said as a statesman, दूसरी तरफ Indian economy was going through crisis. We were having many problems. जो उन्होंने गरीबी हटाओ बोला था वो, तो she had taken massive measures to counter them. And वही period था when in India, if we talk, there were two areas, Gujarat and Bihar, two मतलब कि बहुत ही contentious areas, जहां पर एकदम से movements or you can say the protest started. And these protests, one at Gujarat and the second one is Bihar, these were hallmark for the Indian political history, because that also brought up the people who are not active, like Jay Prakash Narayan. And then in a what we say in an impulsive way, the government also changed certain fundamental rights, some constitutional amendments, which was a conflict with the judiciary. And then when there was a protest, which we say कि protest होना तो freedom है, हमारा right to freedom to protest is our right. लेकिन उन rights को over power करते हुए the prime minister declared emergency, which is actually a very serious issue while you are declaring emergency. Emergency can be a political, it can be an economic or मतलब कि financial. लेकिन उन्होंने जो emergency declare किया था, there were no backgrounds or backdrop of that. अगर हम बहुत ही deep जाते हैं तो we only come to know that it was she had a threat, कहीं ना कहीं उनको personal threat लग रहा था, and that was where she had taken it. She said कि it was a threat to the law and order. लेकिन अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर में इतना थ्रेट नहीं था जितना कि शी हैड पोर्ट्रेड. एंड देन ड्यूरिंग दोस पीरियड, दैट वो जो पीरियड था इमरजेंसी का, दैट वाज वन ऑफ द वर्स्ट पीरियड्स इन इंडियन हिस्ट्री, because the civil liberties, civil rights were taken off. There was no way where a common people could approach. Many repressive measures were taken, which actually led to unrest in the country.
There was dissatisfaction among the people, and very soon, when the elections were there, the political party lost because some of the provisions were actually misused, like preventive detention. And इस कंट्रोवर्सी की वजह से there were emergence of parties जिन्होंने इलेक्शन को लिया. Elections definitely they won, even though the stability was not there. लेकिन इमरजेंसी ने हमको एक लेसन जो है वो दे दिया था. Lesson was there because Janata Party came into the power, but of course it was not that much successful. उसके बाद there was rise and fall again. Once again the Congress had to come. लेकिन इस पूरे एपिसोड से the nature of Indian politics changed. The trust जो पहले था that changed. People's perceptions changed. And later on जब शाह कमीशन बिठाया गया था to find मतलब कि analyze the evaluate this, so first of all she was not present, and later on the reasons which she gave was not justified. और इसीलिए when we talk हम लोग इस चैप्टर को जो है क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर कहते हैं, because it had led to the downfall of democracy. I have heard that a movie has been released, so you can definitely watch if you want. If you can ask your parents, they may be better able to tell, or your grandparents, if they are, they would be able to better tell how things actually went. For me, it was my father who told me all these. मैं जब इस चैप्टर को पढ़ाती तो when I say it is personal, that is because I came to know about all those atrocities, all those things from my father who told. ऐसा हुआ था. So that is why we call it as crisis, because हमारी इंडिया के जो डेमोक्रेसी which is said to be the largest, powerful, very successful, उस वक्त उस short period के लिए it actually went into crisis. That is a chapter, of course, a very important chapter as per syllabus, as per IAS syllabus, as per our political knowledge. हर तरीके से इस चैप्टर को अगर हम पढ़ते हैं तो it is going to be beneficial for us. So let us just take a summarized understanding of the chapter. Since 67, Indira Gandhi had emerged as a towering leader with a tremendous popularity. And this was also the period when party competition became bitter and polarized, since she was the one जिसकी वजह से आपके कांग्रेस के अंदर जो है there were split also. The period also witnessed tensions in the relationship between government and judiciary, because there were changes and judicial review के according those changes were not necessary, were not allowed. The Supreme Court found many initiatives of the government to be violative of the constitution. The Congress party took the position that this stand of court was against principle of democracy and parliamentary supremacy. मतलब दोनों तरफ यही चीज थी. उनका मानना था कि they are only following the democratic principles. The Congress also alleged that court was conservative and was becoming an obstacle in the way of implementing pro-poor welfare programs. The parties opposed to Congress felt politics was becoming too personalized and governmental authority was being converted into personal authority. This is what everyone says, कि there was something which was more personalized. And the split between the Congress, in the Congress had sharpened the division between Indira Gandhi and her opponent. मतलब ये हमारा backdrop है.
द पॉलिटिकल बैकड्रॉप ये है कि इसको हम क्यों क्राइसिस कहते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल बिलीव्ड इट वाज अ पर्सनल अटैक। जुडिशरी का मानना था कि देयर वाज मिसयूज, लेकिन गवर्नमेंट का मानना था कि इट वाज एन ऑब्स्टिकल इन प्रो। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द इकोनॉमिक कंटेक्स्ट, एज आई सेड, उस वक्त हमारा जो मतलब कि देश है वो कंप्लीट क्राइसिस में ही था। दो the programs were implemented, but those programs actually could not cover up what actually should have been done. There was a general atmosphere of dissatisfaction with the prevailing economic situation all over. The socio-economic condition did not improve much after 71-72. Then the Bangladesh crisis had put a heavy strain on India's economy because एक तरफ वॉर था तो दूसरी तरफ आपके रेफ्यूजीज भी थे। एंड देन अगेन देयर वाज अ, मतलब ये जो वॉर था और आपका ये दोनों था ना, तो दोनों से आपके पैसा तो खर्च हुआ ही हुआ। एंड ड्यू टू द वॉर यूएस गवर्नमेंट स्टॉप द एड्स टू इंडिया। ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो गई, यानी कि अब मतलब कि द कंट्री वाज सर्कमवेंटेड विद सो मेनी प्रॉब्लम्स। एक तरफ आपके ऑयल के प्राइसेस ज्यादा हो गए थे, एड बंद हो गया था, रेफ्यूजीज आ गए थे, वॉर का खर्चा हो गया था, इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाज लो एंड अनएम्प्लॉयमेंट वेरी हाई। तो उस वक्त द गवर्नमेंट फ्रोज द सैलरीज ऑफ इट्स एम्प्लॉय विच कॉज डिससैटिस्फैक्शन। मतलब उन लोगों की सैलरीज रिलीज नहीं की। मॉनसून फेल। इन सच अ कॉन्टेक्स्ट, मतलब you can say external, internal, natural, all the causes were there, और इसी का फायदा उठाया नॉन कांग्रेस ऑपोजिशंस ने। देयर वाज आल्सो increase in the activities of Marxist group who did not believe in parliamentary politics. आपके Marxism most in the eastern side में, and they took arms insurgent techniques. तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज थी। देर आर सो मेनी स्टोरीज अबाउट दिस मार्क्सिज्म। अब आया हाउ द प्रोटेस्ट एक्चुअली स्टार्टेड। इन जनवरी 1974 गुजरात students started an agitation against the price cooking oil, other essential commodities, and corruption. The students' protest was joined by major opposition parties and it became a मेजर प्रोटेस्ट। और उसकी वजह से क्या हुआ? द प्रेसिडेंट्स रूल वॉज इम्पोज्ड इन द स्टेट। द ऑपोजिशन पार्टीज डिमांडेड फ्रेश इलेक्शंस। मोरारजी देसाई, अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ कांग्रेस को, जो उस वक्त में उनके राइवल थे, announced he would go on an indefinite fast if the elections were not held. Under intense pressure from the students supported by the opposition, elections were held and Congress was defeated. तो गुजरात के अंदर सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम आया। सिमिलर वाज देयर इन बिहार ऑल्सो, लेकिन बिहार में थोड़ा पॉलिटिक्स दूसरी तरफ चला गया। इन और यहीं से हमें दो मेन लीडर्स मिले। मोरारजी देसाई, हु लेटर ऑन आल्सो वाज द प्राइम मिनिस्टर, देन जयप्रकाश नारायण, ही वाज आल्सो। तो ये सारे हमें मिले इन मार्च 74। वो तो आपका था जैन में। फिर 3 महीने बाद ही स्टूडेंट्स केम अप इन बिहार टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सेम थिंग। जयप्रकाश नारायण, वन ऑफ द की मेंबर्स, ही वाज इन्वॉल्वड इन द सोशल वर्क। उन्होंने जो है वापस पॉलिटिक्स में आए और उन्होंने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया। और ये जयप्रकाश नारायण के बाद आपके ऊपर जो है अलग सा देयर इज वन पर्टिकुलर टॉपिक ऑल्सो। He accepted on the condition that the movement will remain non-violent and will not limit itself to Bihar. So people from all the walks entered. He demanded dismissal of Congress government, gave a call for total revolution. यही आपके पेपर में आता है। What is the meaning of total revolution? It's an important context. Total revolution का मतलब होता है where social
इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फेयर्स को बिल्कुल पूरी तरीके से रीवैम्प करना. He wanted to revamp all the spheres. So there were बंद, घेराव, स्ट्राइक, एंड गवर्नमेंट ने तभी मतलब कि रिजाइन करने से मना कर दिया. इस प्रोटेस्ट के साथ रेलवे का भी एक स्ट्राइक चला था. द रेलवे स्ट्राइक वाज आई थिंक लेड बाय जॉर्ज फर्नांडिस. नाउ जेपी उनको प्यार से बुलाया जाता था. जयप्रकाश led a people's march to parliament, and this was one of the largest rallies. He was now supported by Bharatiya Jan Sangh, Congress O, Bharatiya Lok Dal, and everyone. These parties were projecting JP as alternative to Indira Gandhi. So now, what was Jayaprakash Narayan's total revolution? Important नहीं, बहुत important है. This is not important, this is very important. Jayaprakash Narayan viewed India society of communities encompassing three key layers: community, region, and Rashtra. So based on this principle, he advocated transformation of individual, society, and state through his total revolution. उनका मानना था कि we need to cover cultural, economic, political, educational, and ecological transformation. Means हमें पॉलिटिक्स के अंदर जो है विलेज मोहल्ला समिति लेकर आना चाहिए. एंड ऊपर के लोग, मतलब they need to join the political struggle for a clean politics. And it means revolving around a man who could be real catalyst of change in India. Means he wanted there should be complete, ये जो corruption है, इस तरीके के जो मतलब की behavior है, that should be completely removed. Very important from exam point of view. This was मतलब कि associated with रेलवे. हाँ, रेलवे स्ट्राइक का बहुत ज्यादा फर्क नहीं हुआ था, बट स्टिल दैट रेलवे स्ट्राइक इज सेड टू बी वन ऑफ द प्रोमिनेंट रेलवे स्ट्राइक्स इन आवर कंट्री. Later on, George Fernandez even was a minister in the cabinet, a very nice politician. The National Coordination Committee for Railwaymen Struggle led by George Fernandez gave a call जिसके अंदर रेलवेज के अपने डिमांड्स थे, विच वॉज रिलेटेड टू बोनस एंड सर्विस कंडीशंस. उन लोगों को अपने सर्विस कंडीशंस, उन लोगों को बोनस चाहिए था. और स्ट्राइक का मतलब था कंप्लीट स्टॉप. उसके अलावा नॉट ओनली द मनी, इट ऑल्सो रेज्ड इश्यूज लाइक राइट्स ऑफ द वर्कर्स एंड वेदर एम्प्लॉयज ऑफ एसेंशियल सर्विस. अभी तो हमारे यहाँ पर है एस्मा, एसेंशियल सर्विस मैनेजमेंट एक्ट इज देयर. और एसेंशियल सर्विस के अंदर जो डॉक्टर्स होते हैं, रेलवे एम्प्लॉयज होते हैं, दे आर नॉट सपोज टू गो ऑन स्ट्राइक फॉर अ लॉन्ग पीरियड. और अगर ऐसा कुछ करते हैं तो दे कैन बी इम्पोज विद दैट एक्ट एंड दे कैन बी कॉल्ड बैक. सो द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड द स्ट्राइक इलीगल as the government refused to concede the demands, arrested many of their leaders, deployed the territorial army to protect the railway tracks. The strike had to be called off after 20 days without any settlement. But it is said कि वो जो 20 days था ना, that was very horrible for the Indian commuters because transport बिल्कुल ठप पड़ चुका था. लेकिन इतना बड़ा प्रोटेस्ट भी बहुत ही कम था. So if we look into the political drawback, we would see that Indira Gandhi had become a bit, she was circumvented with many problems. उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी प्राइस राइज, दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट, तीसरा स्टॉप ऑफ एड. बैकड्रॉप में आपका जो है वॉर के जो खर्चे. ऑन द अदर हैंड द प्रोटेस्ट बाय पीपल. और उस वक्त there was one more, you can say, milestone, which was a conflict with judiciary.
अब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है. This was also the period when the government and the ruling party had many differences with the judiciary. पेपर का important question है ये. First, can the parliament abridge the fundamental rights? Supreme Court said it cannot, because हमारे constitution के according it is the judiciary which has the power to interpret constitution. Secondly, can the parliament curtail the right to property? Right to property उस वक्त एक बहुत बड़ा एक मतलब कि आया था. Later on it was transferred into constitutional right. Again it said that parliament cannot amend the constitution in such a manner that rights are curtailed. But बाद में हमारा right to property जो है वो civil उसमें आ गया था. Thirdly, Parliament amended the Constitution saying that it can bridge fundamental rights, giving effect to directive principle. Supreme Court ने कहा नहीं, और इस वजह से there was a conflict, और ये conflict जो है it was too severe, क्योंकि normally हम कहते हैं कि जो ruling party होती है it doesn't have, ruling party or government doesn't have any authority in selection of the judges or in their impeachment or anything related to judiciary. मतलब हमारा जो executive, legislative and judiciary ये तीनों अलग है. They can only check and balance each other, but they cannot take the decisions in this regard. That is why we say कि we are having a मतलब कि नॉन बायस्ड. लेकिन उस वक्त में ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था. नॉर्मली नो मतलब कि जो गवर्नर्स होते हैं आरबीआई के या फिर इलेक्शन कमीशन के, इन सब में हमारा जो है मतलब द गवर्नमेंट डजंट हैव मोस्ट से, दे आर ओनली कंसल्टेड. So now what happened? First, immediately after the Supreme Court's put decision 73 in Kesav Nanda Bharati case. ये जो केशव नंदा भारती केस था, that was the one which relates to the right to property case which was there, कि ये जो मतलब कि सन्यासी थे जिनके पास प्रॉपर्टी थी, there was one question कि how much property one should acquire. अंडर राइट टू प्रॉपर्टी यू कैन एक्वायर, आप एक्वायर कर सकते हो, आपको प्रॉपर्टी आप उसको ले सकते हो. लेकिन देन देयर वाज वन कि भाई व्हाई शुड इट बी डन, एंड दैट वाज अ पॉइंट जब ये वाला जो राइट टू प्रॉपर्टी है दैट वाज ट्रांसफर टू द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, नॉट द फंडामेंटल. और उस मतलब कि केस के बाद चीफ जस्टिस जो है ही हैड रिटायर्ड. तो आपको पता है द अपॉइंटमेंट इज सीनियर मोस्ट जज जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं उनको विद द मतलब कि हैविंग द कंसल्टेशन विद प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट मिनिस्टर. बट इन 73 जब ये हुआ तो द गवर्नमेंट सेट असाइड द सीनियरिटी ऑफ 3 जजेस एंड अपॉइंटेड A.N. Ray as the chief justice, because ये जो 3 judges who were superseded had given rulings against the stand of the government. और उन वो तीनों सीनियर थे, देखा जाए तो they must have given they must be the judge justice, उनको होना चाहिए था. लेकिन हुआ क्या? It was A.N. Ray. The climax of the confrontation was of course a ruling of High Court declared Indira Gandhi's election invalid. ये था आपका इलाहाबाद में हुआ था, because that's wrong. Our constitution does not provide the government to interpret in such a manner, and it is not supposed to take any decisions in regard. It can only give its consultation, not decision. How उसका election कैसे हुआ था? It was not because of this. It was because of हमारा moral code of conduct क्या बोलता है? What does the moral code of conduct say? The moral code of conduct says that we are not supposed to misuse the property of government while we are campaigning. So there was serious allegation. On 12 June 1975, Jagmohan Lal Sinha of Allahabad High Court passed a judgment declaring her election to the Lok Sabha invalid. This is because this is
filed by and petition by राज नारायण, जो लीडर थे, उन्होंने उनके अगेंस्ट किया था. He said she had used the services of government servants in her election campaign. यानी कि आपका जो है violation of moral code of conduct. The judgment of High Court meant legally, क्योंकि उसने वहीं से she had. अब now the question is why Allahabad? She was from that constituency. So now she was no more MP and therefore could not remain prime minister again, unless she was once again elected as MP within 6 months. अब उसने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन डाला तो देयर वाज पार्शियल स्टे, बट वो लोकसभा के प्रोसीडिंग्स में शी कुडंट टेक द हर स्टैंड. तो दिस वाज वन. तो कहीं ना कहीं पर्सनल ग्राउंड भी हो गया. नाउ the opposition political parties led by Jayaprakash Narayan pressed for Indira Gandhi's resignation and organized a massive demonstration in Delhi's Ram Leela ground on 25th. ये डेट याद रखना. This is the date of proclamation of emergency. Jayaprakash announced a nationwide satyagraha for resignation and asked the army, police, government employees not to obey illegal and immoral order. एक तरफ से आमना सामना हो गया और इसका जो जवाब था, it was the declaration of state of emergency. और state of emergency किस ground पे किया गया? That there was a threat of internal disturbances. So in मतलब कि article 352 के according emergency was declared. Under this provision, अब यहाँ पे यही problem है कि this provision actually doesn't give a clarity. आप law and order किस चीज को बोल रहे हो? Partly she was right, but partly she was wrong. Because the article is not clear कि what exactly means violation of law and order. Under the provision of, this is not, मैं नहीं बता रही हूँ, this is a chapter. Article, the government could declare a state of emergency on the grounds of external threat or threat of internal disturbances. And it decided that a grave crisis had arisen which made the proclamation of state of emergency necessary. Constitution provides some special powers to the government once emergency का मतलब क्या है? The power is जो मतलब की रूलिंग पावर्स होते हैं बाकी चीजों में, अगर पूरे देश में है तो स्टेट गवर्नमेंट के जो पावर्स अगर होते हैं वो हट जाते हैं. सिविल लिबर्टीज आपकी हट जाती है. Once an emergency is proclaimed, the federal distribution remains practically suspended. यानी कि आपके स्टेट के पावर्स नहीं होते और यूनियन के पास सारे पावर्स होते हैं. Secondly, it also gets the power to curtail or restrict any of the fundamental rights during the emergency. और ये emergency declare कैसे हुआ था? The Prime Minister recommended the emergency to President Fakhruddin Ali Ahmed रात के 2 बजे. And she had this specific meeting at 6 o'clock in the morning with her cabinet. After midnight, the electricity of all major newspapers were disconnected. Morning, the number of leaders and workers को preventive detention के under arrest किया गया. The cabinet was informed around 6 a.m. कि ये सब हुआ है. So this was how the emergency was declared in a very impulsive manner. Most of the current leaders who are right now in the ruling or opposition were those उस वक्त में जो लोग arrest हुए थे, like L.K. Advani ji, Atal Bihari Vajpayee. These people were those who had been arrested during that period under preventive detention. Up, what was the consequence? It brought agitation to an abrupt, क्योंकि कोई कर ही नहीं सकता था. Strikes were banned.
opposition leaders were put into the jail or situation was tense. गवर्नमेंट ने फ्रीडम टू द प्रेस को हटा दिया, फ्रीडम टू स्पीच के अंडर। न्यूज़पेपर्स को बोला गया कि वॉट एवर यू आर पब्लिशिंग देयर शुड बी परमिशन, जिसको हम प्रेस सेंसरशिप कहते हैं। देन जो आपकी रिलीजियस मतलब कि ऑर्गेनाइजेशंस है लाइक आरएसएस, जमायत इस्लामी, इनको भी हटा दिया। फंडामेंटल हमारे राइट्स हट गए, राइट ऑफ सिटीजन टू मूव टू द कोर्ट वो भी हट गया। क्या किया जाए? इन केरला देयर वर सो मेनी इंसिडेंट्स जहां पर बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ वायोलेशन द पीपल हैड सफर्ड, दे वर डेड एंड नोबडी कुड डू एनीथिंग, क्योंकि आप कोर्ट तो जा ही नहीं सकते थे ना। द गवर्नमेंट मेड एक्सटेंसिव यूज ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन वैसे क्या होता है? गवर्नमेंट कैन अरेस्ट एनीवन ऑन द ग्राउंड कि द पर्सन और द पर्सन्स आर थ्रेट टू द लॉ एंड ऑर्डर। प्रिवेंटिव डिटेंशन तो हम उसी को कहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको यूज नहीं, मिस यूज किया। जितने लोगों को वो अरेस्ट कर सकते हैं उनको हटा दिया, एंड दे कुड नॉट इवन चैलेंज थ्रू हेबियस कॉर्पस पिटिशंस। Several high courts gave judgment that even after declaration of emergency, court could entertain a writ of habeas corpus. In April, the Constitution bench of Supreme Court overruled High Court and accepted government's plea. Means emergency के दौरान government could take the citizens' right to life and liberty. There were many acts of dissent, resistance to the emergency. Many political workers who were not arrested went underground and organized protests against the government. आप इस वक्त इमेजिन कर सकते हो कि उस वक्त हमारे इंडिया का हाल कैसा था। मतलब हम एज अ कॉमन मैन कहीं जा नहीं सकते थे, कोर्ट के पास जा नहीं सकते थे, इवन सुप्रीम कोर्ट ने उनको सपोर्ट किया था। एंड दोज हु वर प्रोटेस्टिंग दे वर अंडरग्राउंड, अपने लिए डरे हुए थे, एंड दे वर protesting against the government. Newspaper like Indian Express and Statesman protested against the censorship, जो उनके मतलब कि जो मेन एडिटोरियल कॉलम होता था उसको ब्लैंक छोड़ते थे। Magazines like Seminar and Mainstream chose to close down. Many journalists were arrested during that period. Many underground newsletter and leaflets were published by मतलब चुपके से किया जाता था। कुछ लोगों ने अपने अवार्ड्स लाइक शिवरामन करंत, उन लोगों ने अपना पद्म भूषण वगैरह भी वापस किया था। बट गवर्नमेंट जो है, इट वाज नॉट दैट मच सपोर्टिव एट दैट टाइम। इट वाज द वर्स्ट टाइम। नाउ अब देखो मजा। अब गवर्नमेंट के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता है। ऑल द राइट्स हैव बीन स्नैच्ड। The parliament brought many new changes to the constitution. In the backdrop of ruling of Allahabad court, जिसके अंदर उनके मतलब कि उसको एमपीशिप को हटा दिया गया था, amendment was made declaring election of prime minister, president, vice president could not be challenged. उनको आप चैलेंज नहीं कर सकते। Don't you think that it was an atrocity? And the 42nd amendment was also passed, जिसके against 6 years का legislation बना दिया गया था। 5 years की जगह 6। याद रखना, this is one of the very important question. Among the various changes, one was the duration of legislature from 5 to 6. This change was not only for emergency, for even for permanent nature. मतलब इस पीरियड में नहीं, इवन बाद में भी 6-6 साल का रहेगा। यानी कि 1 साल का आपका इलेक्शन पोस्टपोन हो गया तो she could get the time, the government could get the time. So this is how emergency is said to be the controversial episodes in Indian politics. Now some people say it was necessary. As I said, there is no clear clarity regarding the article, and some people of course say that it was not necessary. One reason that there are different viewpoints, the need to declare emergency was
The constitution simply mentioned internal disturbances, but as a reason for declaring emergency. Before 1975, this was never proclaimed on this ground. Another reason is the government practically suspended the democratic functioning. The Shah Commission, जिसने इसको evaluate किया था, उन्होंने कहा there were many excesses. पेपर में आता what is excesses, आपके पेपर में आता what is excesses, मतलब excess में atrocities, the atrocities. Finally, there are varying assessment of what lessons emergency are for practice of democracy in India. ये इसको हम controversial क्यों कहते हैं? क्योंकि why it was declared is still a question. But when it was declared, तो democracy कहते हैं, लेकिन वो period हमारा democratic नहीं था. And also it was said that many atrocities were there during that period. जरूरत नहीं थी. So now let us come to the favor. The government said opposition parties must allow the elected ruling party to govern according to its policies. उनको लग रहा था frequent recourse to agitation, protest, collective actions are not good for democracy. आप मतलब उनका कहना था freedom to speech के नाम पर you are only hampering the work. Supporters of Indira Gandhi said continuous extra parliamentary politics targeting the government leads to instability. मतलब वहां देखें या फिर गवर्नमेंट को रूल करने में देखें डिस्ट्रैक्ट होते हैं. All energies are diverted to maintenance of law and order. Indira Gandhi wrote a letter to Shah Commission that submersive forces were trying to obstruct the progressive program and were attempting to dislodge her from power through extra constitutional means. उनका मानना था कि वो लोग गलत तरीके से उसको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं. And some people, CPI supporter to Congress, उन्होंने कहा it was not a national but an international conspiracy. क्योंकि it is believed in such circumstances some restrictions on agitation were justified. By there were some, क्योंकि उससे पहले बांग्लादेश का वॉर हुआ था एंड यूएस ने हमें सपोर्ट करने से मना कर दिया था. तो देयर वर आल्सो द थियरीज कि शायद इंटरनेशनली उसको यहां से हटाने की कोशिश की जा रही है थ्रू दीज इवेंट्स. बट what who were against democracy, JP and other leaders felt democracy people had the right to publicly protest. And बिहार में तो उन्होंने कहा भी था कि it should be only non-violent. So they said they were peaceful and non-violent. Those who were arrested were never tried for any anti-national activity. No cases were registered against most of उनके खिलाफ तो कभी कोई केस थे ही नहीं, तो उन लोगों को क्यों अरेस्ट किया? Then उन्होंने कहा the Home Ministry did not express any concern about the law and order. If some agitations had overstepped, the government had enough routine powers. उनके पास पावर्स थे भाई, वो उस तरीके से उनको डील करते ना. इमरजेंसी डिक्लेयर करने की क्या जरूरत? डेमोक्रेटिक फंक्शन को सस्पेंड करने की क्या जरूरी थी? ड्रैकोरियन मेजर्स लाइक इमरजेंसी लेने की क्या जरूरत थी? भाई अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला जो है वो ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहा है तो यू हैव अदर वे, यू कुड हैव डन दैट. इमरजेंसी करने की जरूरत नहीं थी, आप उनको डील कर सकते थे. The threat was not to the unity and integrity, but to the ruling party and prime minister. उनका मानना था she misused a constitutional provision meant for saving the country to save her personal power. The allegation goes on both sides. So now, what happened actually during the emergency? मतलब कि this is the one which really हमें जो है ना अंदर से हिला देता. And anyone who reads this would always pray कि ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए. The actual implementation of emergency is another contentious issue. The government said it want to use emergency to bring law and order, restore efficiency, above all, implement the programs.
एंड शी हैड इंदिरा गांधी हैड अनाउंस 20 पॉइंट प्रोग्राम. पहले 10 पॉइंट था, फिर 20 हुआ था, जिनमें उन्होंने बैंक्स के नेशनलाइजेशन, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, एग्रीकल्चरल वेजेस, इरेडिकेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर वगैरह डाला था. So first, the urban middle class were generally act because agitation came to an end and discipline was enforced on the government employees, क्योंकि उनकी सैलरीज रोकी गई थी, उनको टाइम से जाना पड़ रहा था. The poor and rural also expected that ये welfare programs होंगे. Critics say that these promises remain unfulfilled. These were simply meant to divert the attention from the excesses that were taking place. पीछे जो आपकी atrocities हो रही थी ना, उन पर ध्यान लोगों का ना जाए, इसलिए ऊपर ऊपर से उनको जो है that was only flattered over. The Shah Commission, sorry, they questioned the use of preventive detention. The Shah Commission says 1,11,000 people were arrested. Severe restrictions were put on press, even without legal notices. The Shah Commission reports the general manager of Delhi Power Supply received verbal order, or government के अंदर verbal orders are never followed. Even in the companies also, we have a scalar chain, and all the official जो information होता है, that should be generally passed in the written way. और उनको रात को 2 बजे सिर्फ एक जनरल ऑर्डर आया था. और इलेक्ट्रिसिटी वाज रिस्टोर 2 to 3 days लेटर, जब सेंसरशिप पूरा प्रॉपर सेट हो गया. संजय गांधी, जो उनके छोटे बेटे हैं, ही डिड नॉट हैव एनी ऑफिशियल, लेकिन उन्होंने जो है इंटरफेरेंस की थी. बहुत सारी चीजें इस बारे में वी डोंट एग्जैक्टली नो. लेटर ऑन ही वाज आल्सो किल्ड. हिज रोल इन द डेमोलिशन, आपका ये दिल्ली गेट, उसके पास, आईटीओ के पास, लोगों को जबरदस्ती स्टरलाइज करना, बच्चे ना मतलब कि आगे हो, इट वाज कंट्रोवर्शियल. इवन दो उस वक्त गवर्नमेंट लेकर आई थी हम दो हमारे दो करके, बट इट वाज फोर्स्ड. देन टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ, यही मैंने आपको बताया, आपकी बुक में भी था पहले, मतलब कि इट वाज देयर, कि देयर वर सम एरियाज, आई थिंक द पर्सन नेम वाज राजन और समथिंग, कस्टडी में डेथ हुई थी. हाउ? बट नोबडी कुड नॉक द डोर. आर्बिट्री रीलोकेशन ऑफ पुअर पीपल, इट इज सेड कि उन लोगों को रातों रात हटा दिया जाता था. दिस इज व्हाट आई सेड, माय फादर टोल्ड मी. द एरिया वुड बी सडनली engulfed with fire, एकदम आग लग जाती थी, and then these people were relocated. So these were the atrocities which took place. Now nobody knows who was actually involved, लेकिन ये सब चीजें इमरजेंसी के दौरान हुई थी. इनमें से कुछ के तो सामने सामने नाम है. तो इससे हमें क्या मिला? Do not forget to learn this question from this chapter for your boards. One of the very, very, very important. Because that is how the current politics came up. Emergency रहा, लेकिन democracy नहीं हटा. It did not bring any dictatorship. It brought some, ये जो मैंने आपको बताया, ambiguities regarding the emergency provision that have been rectified since. Internal emergency can be proclaimed only on the ground of armed rebellion, and it is necessary that advice to president to proclaim emergency must be given in writing by council. मतलब इस चीज को रेक्टिफाई किया गया था, क्योंकि हमारे एम्बिजिटी क्या थी, देयर वाज नो क्लैरिटी कि किस ग्राउंड पर आप इमरजेंसी करोगे. नाउ उसके उनके अकॉर्डिंग तो व्हाट शी हैज डन इज आल्सो राइट, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने किया था दैट वाज राइट. क्योंकि देयर वाज नो क्लैरिटी इन द आर्टिकल. हम अगर आर्टिकल को देखते उसमें तो सिर्फ ये था कि इंटरनल डिस्टर्बेंस, वो भी तो इंटरनल डिस्टर्बेंस ही है ना. व्हाट शी सेड वाज राइट. लेकिन इंटरनल डिस्टर्बेंस का एक प्रॉपर डेफिनेशन बाद में डाला गया, और वो इसमें डाला गया कि भाई अगर लोग आपके खिलाफ गोली बारूद लेकर खड़े होते हैं
तो इंटरनल डिस्टर्बेंस होता है। जस्ट प्रोटेस्ट को आप इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं कह सकते हो, वो आपने माना। देन व्हेन यू आर गिविंग समथिंग, ऐसा नहीं है कि आप जाकर बात करके यू आर डूइंग इट, यू हैव टू गिव इट इन द राइटिंग, एवरीथिंग शुड बी रिकॉर्डेड and it must be given in writing by the council of ministers. They were only informed. थर्ड, जैसे मैंने कहा उन दिनों में तो किसी को पता ही नहीं था, लेकिन जब वो चले गए ना राइट्स, वो कहते हैं ना एब्सेंस इज द बेस्ट प्रेजेंस। तो व्हेन द सिविल लिबर्टीज चले गए तो पीपल एक्चुअली अंडरस्टूड द वैल्यू। द कोर्ट्स हैड टेकन active role after emergency in protecting the civil liberties. This is a response to the inability of judiciary to protect civil liberties effectively during the emergency. Because बहुत सारी ऐसी चीजें हुई थी। There was a tension between routine functioning of a democratic and political protest by parties. The actual implementation of emergency rule took place through the police and administration, क्योंकि उन्हीं लोगों ने किया था। These institutions could not function independently, उनको फोर्स था। They were political instruments. The administration and police became vulnerable to political pressures. वो आज भी आप देख सकते हो। So these are the lessons that we have learned कि कहाँ पर there are some ambiguities which we need to. फिर क्या हुआ? It is obvious कि the political party could never come to a success अगर ऐसा हुआ है तो। The elections turned into a referendum. हम लोगों ने पहले बढ़ा था सेव डेमोक्रेसी, मतलब कि रिमूव इंदिरा, ये वाला जो था, ये सेव डेमोक्रेसी यहीं पे आया था आपका। The opposition fought election on the slogan save democracy. And definitely after 18 months when the government decided, the leaders were activists were released, elections were held. लेकिन प्रॉब्लम क्या थी पता है? इलेक्शंस और लीडर्स की रिलीज में टाइम नहीं था, तो दे डिड नॉट हैव टाइम टू कैंपेन। लेकिन ये जो न्यू ऑपोजिशन पार्टी थी, इनका नाम था जनता पार्टी, जो जयप्रकाश नारायण के साथ था। इवन द लीडर्स फ्रॉम द कांग्रेस जो उसके खिलाफ थे, इवन दे वर ऑल्सो देयर। इन्होंने अपना नाम कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी था। दे ऑल्सो मर्ज विद जनता पार्टी। The Janata Party made its campaign, which was focused on the non-democratic rules and the excesses that took place. Jayaprakash became a popular symbol, और उनका वो ये भी इंश्योर कर रहे थे कि जो पहले हुआ था, नॉन कांग्रेस के वोट डिवाइडेड थे, तो पहली बार कांग्रेस पार्टी was defeated in the elections because they got only 154 seats, less than 35, and Janata Party got 330, जिसके अंदर उनका क्लियर मेजॉरिटी था। There was a massive electoral wave. The Congress lost in every constituency. Even उनके जो अपनी कॉन्स्टिट्युएंसी थी वहीं से, रायबरेली से शी वॉज, और उनका बेटा अमेठी से। हाँ, महाराष्ट्र, गुजरात और उड़ीसा में थे, लेकिन क्योंकि जहां इमरजेंसी का ज्यादा असर नहीं हुआ था वहां कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, बट जहां नॉर्दर्न में था, स्पेसिफिकली दिल्ली वाला था, यहाँ पर तो एकदम खत्म। The middle class caste from North India were beginning to move away from Congress and Janata became a platform. So it was not only about emergency but also the change in the entire politics. तो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आज हम जिस पॉलिटिक्स को देखते हैं ना, इसका जो जड़ है ना, ये यहीं से जाता है। It actually starts from here. The party system, the multi-party system, the oppositions, the allegations, the everything. नाउ जनता पार्टी के साथ प्रॉब्लम वही थी कि दे वर मोर फोकस्ड ऑन वन लीडर रादर देन द प्रोग्राम, तो डेफिनेटली उनके लिए भी दैट वाज नॉट अ सक्सेस बट आल्सो अ सेटबैक। द जनता पार्टी दैट केम टू पावर आफ्टर 77 वाज फार अवे फ्रॉम कोहेसिव, मतलब वो उनके प्रोग्राम्स कोहेसिव नहीं थे। आफ्टर द इलेक्शन देयर वाज अ स्टिफ कंपटीशन, वाज अ राइवल ऑफ इंदिरा गांधी एवर सिंस। चरण सिंह, the leader of Bharatiya Lok Dal,
फार्मर्स लीडर, बाद में ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोमिनेंट प्राइम मिनिस्टर। जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम हम बोलते हैं, he was also senior minister. Eventually मोरारजी देसाई became the prime minister. ये पेपर में आपकी वो 3 पिक्चर्स बनी है वो आती है, but did not bring the power struggle within the party to end. मोरारजी देसाई को उन्होंने बना तो दिया, बिकॉज मोरारजी देसाई वॉज अ स्ट्रिक्ट राइवल टू इंदिरा गांधी, लेकिन फिर भी जयप्रकाश नारायण, चरण सिंह, दे ऑल वर देयर इन द लाइन, तो आपस में उनके मतभेद चल रहे थे। The opposition to emergency could keep Janata Party together only for a while. Its critics felt Janata Party lacked direction, leadership, common program. वो लोग जुड़े क्यों थे भाई? They all had joined because they wanted to defeat Indira Gandhi. But उनके पास प्रोग्राम नहीं था. They could not bring fundamental change in policies. The Janata Party split and the government led by Morarji Desai fell down in less than 18 months. Here, as I said, Charan Singh ji aaye the. That was one more period in our country. It was formed on the assurance of support of Congress party. आयरनी देख रहे हो, जो इंसान उनके सामने था वही उनके सपोर्ट में था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना पावर विड्रॉ किया, चरण सिंह जी भी गए। तो विद इन 77 to 80, two government had split up and ultimately one more elections were held. Fresh Lok Sabha elections were held in which Janata Party suffered a comprehensive defeat, जहां 77 में वो जीते थे, and again Indira Gandhi came into power. So this said that the government that are seen unstable and quarrelsome are severely punished by the voters. और इसीलिए इंडिया के अंदर कभी भी coalition has never been a success, because उनके जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, they are not together and run the government, they are together to defeat somebody. वो फिर चल नहीं होता. Now the legacy, the Congress party had started shedding its character as an umbrella party, जो हम already पढ़ चुके हैं, अब हो चुका था. Now it had a particular ideology, claiming to be the only socialist pro-poor party. Thus, within 1970s, the Congress political success depended on attracting people on sharp social ideological divisions and appeal of one leader. With the change in the nature of Congress party, the opposition relied more and more on what now called as non-Congressism. They also realized the need to avoid a division in their votes. ये इलेक्शन में हुआ तो था, लेकिन दूसरी तरफ it was defeat. In an indirect manner, the issue of welfare of backward classes also began to, क्योंकि उन दिनों में हमारे कुछ ऐसे पार्टीज ही फॉर्म हुए थे, जैसे चरण सिंह जी जब आए थे एंड विश्वनाथ प्रताप सिंह जिन्होंने मंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट किया था. The issue of reservation for other backward classes became controversial in Bihar, and Mandal Commission was appointed by Janata Party. और इन्हीं के थे जब आपके विश्वनाथ प्रताप आए थे जिन्होंने मंडल कमीशन को एस्टैब्लिश किया था. So why we call it as a period of constitutional and political crisis? Because कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कि जो पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में देयर वाज अ क्राइसिस. इट वाज अ पॉलिटिकल मतलब कि क्राइसिस, क्योंकि द पार्टी इन पावर हैड एब्सोल्यूट मेजॉरिटी और उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रोसेस को कंप्लीटली खत्म कर दिया था. हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को यही लगा था कि सब लोग उसको मानेंगे, लेकिन देयर वाज मिसयूज. द गवर्नमेंट आल्सो वुड यूज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर. जो उनका मानना था रूल ऑफ लॉ से चलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था. दे वर अब्यूज मतलब मिसयूज्ड. एंड देन
Another critical issue that emerged was the role and extent of mass protest in a parliamentary democracy. There was a clearly a tension between institution based democracy and democracy based on spontaneous popular protest. इंस्टीट्यूशन मतलब अ प्रॉपर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी इनसे बेस करके एंड लोग मिलकर, जैसे जयप्रकाश नारायण ने टोटल रेवोल्यूशन कहा था, तो दैट वाज अ पॉपुलर पार्टिसिपेशन. एज आई सेड, ये आपके सारे जो हैं, दीज आर द वन विच यू कैन जस्ट गो थ्रू. ये वाला बस शाह कमीशन इज देयर इन योर पार्ट. शाह कमीशन का मानना था, जिसको अपॉइंट किया था लेटर ऑन जनता पार्टी ने, which was headed by JC Shah. उन्होंने कहा था कि there was abuse of authority, excesses, malpractices जब आपके election sorry emergency declare हुआ. The commission examined where various kinds of evidences and called score of witnesses to give testimonies. These included Indira Gandhi, who appeared before the commission but refused to answer any question. The government accepted the finding, observation, recommendation contained in the two interim reports and the third and fourth of Shah Commission, and they were tabled in the two houses of parliament. शाह कमीशन को बिठाया गया, सारी चीजें पूछी गई. She gave her own version. She wrote a letter to the Shah Commission, मतलब कि बताते हुए कि where she felt that it was against. But yet, अगर हम लोग on the political ground कहते हैं, so it is said that emergency was actually not required. It could have been, dealt with other way. हाँ, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट इतना नहीं होना चाहिए. अगर रेलवेज मतलब कि जो आपके एसेंशियल सर्विसेज हैं, दे आर गोइंग ऑन स्ट्राइक, या फिर इफ देर आर स्ट्राइक बाय द स्टूडेंट्स, देन इट इज डिसरप्शन ऑफ एजुकेशन, डिसरप्शन ऑफ अदर एरिया. वो बिल्कुल सही है, लेकिन उसको डील करने के लिए देयर शुड बी सम प्रोविजन, नॉट इमरजेंसी, बिकॉज इमरजेंसी से कितने लोग जो हैं दे वर अफेक्टेड, एंड ऑल दोज एक्सेसेस जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है, which happened during that period, is still a mystery. So that is why this chapter is called as the democratic crisis, क्योंकि पूरी democracy हिल गई थी. हाँ, it was only a crisis. It never went into democracy to dictatorship or anything else. There was no coup, then nothing. बस वो short period जो था, that actually gave us lessons, gave a jolt to Indian democracy. That was one of the biggest challenges to democracy during that period. But we can say India ने उसको भी जो है overcome किया, because even though the parties came, लेकिन when people saw there was no clarity, so it also gave the punishment. So it also gave that कि people are with them जो उनके लिए welfare programs बनाता. So this is the chapter, the crisis of democratic order.